See, मैं इधर देख रहा था. Hello. Currently, hip fractures. Currently, there are more than 250,000 hip fractures annually occurring in India. So, associated cost exceeded the billion in the dollar number billion में है. But repair of fractured hip is the most common procedure performed in the people over 85. See, commonly there are so many reasons are there hip fractures. Then accidental injuries हो सकता है. There is an old age हो सकता है. Okay. Prone to get a fracture, especially in the old age, more than 85, more than 68, more than 78, okay, who have fallen from the upper areas, who are fallen from the accident, who are fallen from the vehicles, any type of accident occur, they will may affect the hip. That bone could be fractured. So 30% patient with the hip fracture died with 1 year related to surgery, complication and immobility. देखो maximum patients जो होता है ना 30% केस में जो patients होते हैं ना hip fracture die with the 1 year related surgery complication. After the surgery, especially old age, they were unable to survive because they have lost their immunity power. They have lost their all the physiological functions, especially respiratory system. तो धीरे धीरे से क्या हो जाता है the respiratory system become dysfunctions. The old age become complete long bedridden. It may occur the what the bedridden patient. Once he become bedridden, automatically the complications will occur. So many complications are there that will cause the hip fracture. So osteoporosis is the biggest risk factor है इसके लिए भी. So osteoporosis another one big cause for the hip fractures. Okay. Then classification of hip fracture there is related to the इसमें जो दिया गया related. The so many fractures are there in the hip fractures. See, that is intracapsular, extracapsular, intra-eccentric, then substroke-centric, then transcervical, infractures at base of the neck. Capsular referred to the proximal 1/3 of the bone. See, here in the repairing of the bone, especially the truncator, जो होता है ना, जो इसका ball and socket. See how the fracture will be occurred in the oblique, in the plane, in the transverse. Various type of hip may got affected. In that, intracapsular, extracapsular, inter-eccentric, then substroke-eccentric, like pins. See how that will be fixed in the bone. It will tell in the next classes in the coming PPT. So hip fracture, there are so many signs and symptoms are there. Signs and symptoms of the hip fractures. See, medical emergency like severe pain at the fracture site, inability to move leg voluntarily, then classic shortening and external rotation of the leg. Then 1/3 of the elderly individual with the hip fracture die within 1 year of injury. See, there are so many the people who are got affected by the hip fracture. There is the 1/3 of the elderly individual with hip fracture die within 1 year of injury. So देखो इतना complicated है. इसलिए जो हिप फ्रैक्चर होने के बाद तुरंत 1 ईयर हो गया, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, तो कंप्लीट बेड रिडन होते ही पेशेंट मर जाते हैं. इसलिए 30% केस इज ओनली डाई विद द हिप सर्जरी. याद रखो. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. टिपिकली द बोन इज रोटेटेड एक्सटर्नली, शॉर्टनिंग ऑफ द लेग, ट्राई टू गेट द लेग बैक इनटू द अलाइनमेंट. सी, इसका सिम्टम्स मैं बता रहा हूं आपको. पेन होगा, कंप्लीट इनएबिलिटी टू मूव द लेग वॉलंटरली, तो नींद निकाल रोटेट नहीं कर सकते, ना मूव कर सकते हैं, ना इधर उधर घुमा सकते हैं. आइदर इट इज अडक्शन और अबडक्शन और रोटेशन. और शॉर्टनिंग होता है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द लेग. आप बाहर भी नहीं निकाल सकते उसको, रोटेशन भी नहीं कर सकते, शॉर्टनिंग होता है लेग. ओके, 1/3 ऑफ द एल्डरली इंडिविजुअल विद द हिप फ्रैक्चर डाई विद इन 1 ईयर. वो तो कॉम्प्लिकेशन हो गया. टिपिकली द बोन इज रोटेटेड एक्सटर्नल. बोन टिपिकली क्या होता है, जो हेड में ही होता है ना, वो टिपिकली रोटेट हो जाता है. ओके, shortening of the leg, automatically the leg become the normal alignment of the leg become shortened. Try to get the leg back into the alignment. Okay, these are the main symptoms of the hip fracture. And what are the medical management? See, there are so many two types of management, conservative management and surgical management. In the conservative management में कुछ नहीं करते, उसमें only completely उसको immobilize करना है पार्ट को, जो भी फ्रैक्चर हो, चाहे इधर it is maybe a hip fracture or it may long bone fracture or it is any fracture. हमेशा द पेशेंट को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, ये याद रखना. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. देन प्रोलॉन्ग्ड इनएबिलिटी टू 12 to 16 वीक्स बोथ द एरियाज. देन अवॉइड द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड विद द एनेस्थीसिया. इसलिए उसको रिस्क लेना नहीं है, उसको अवॉइड ही करना है. ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट में देयर आर सी so surgical management, reduction and stabilization of the fracture with the insertion of the internal fixation. मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था फ्रैक्चर में, सॉरी नॉट इन द फ्रैक्चर में, some type of fixation will be there, and the internal fixation, another one the external fixation.
वो इंटरनल में जैसे कि लाइक रॉड फिक्स करना है और स्क्रू फिक्स करना है, प्लेट्स फिक्स करना है, बहुत सारे हैं, उसको इंटरनल बोन में फिक्स करके उसको नॉर्मल अलाइनमेंट में लाते हैं. ओके, ब्रिंग बैक इनटू द नॉर्मल पोजीशंस. So stable plate or screw, like जो plate according to the surgery, this will be decided by the surgeon, ortho surgeon. Okay, now that is 6 weeks to 3 months. Telescoping nail है, minimal to partial 6 weeks to 3 months. Then prosthetic implant and replace the femoral head and neck. उसको बोलते हैं replacement. It will be made by the completely हो सकता है इसमें देखो डिफरेंट रॉड होता है, प्लेट्स होता है, मेटल्स होता है, उसको डिपेंड होता है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कैपेसिटी टू बॉय, capacity to pay money. These all are important for the surgical prosthetic measurement on the hip fracture. Okay, there are so many, Indian भी है, foreign भी है, और either metallic भी है और costly भी होता है. उसमें according to that wish, the patient wish, doctor will allow the fixed into the hip fracture. That is position restriction 2 weeks, 2 months उसको करना ही करना है. कंप्लीट बैठना नहीं है, हमेशा बेड में रहना, बेड पे ही लेटे रहना है. पार्शियल बेयरिंग 2 months. जो भी बीट वेरिंग जो होते करते हैं ना रेगुलरली, उसको 2 months तक अवॉइड करना. ठीक है. Then some instructions are there that should be followed by during the time of hip fractures. Okay, do not, क्या करना नहीं चाहिए, ना करना नहीं चाहिए, flex more than, इसको नहीं करना है, more than 90 degree flex करना है. Force hip into adduction and internal rotation. देखो adduction कैसा होता है, away from the body towards the body, adduction and abduction. Then rotation, then force hip into the adduction and internal rotation. Then cross the legs को ऐसे क्रॉस नहीं करना, ऐसे सोना नहीं, हमेशा हम लोग आदत होता है क्रॉस लेग पे सोना है, इसको नहीं करना है. Put on own shoes and socks up to 8 weeks, इसको नहीं करना है. Sit in chairs that do not have the armrests, चेयर में बैठ सकते हैं but that should not have the armrest नहीं होना चाहिए. ओके, क्या करना चाहिए, follow the some instruction, do not and do, क्या करना है क्या नहीं करना. सी क्या करना है, कीप इन एक्सटेंशन एडक्शन, हमको पता है हमेशा एक्सटेंशन करना है, अबडक्शन करके सोना है, अवे फ्रॉम द बॉडी एक्सटेंशन होना चाहिए ऐसे. ठीक है. देन यूज टॉयलेट सीट रेजर, आपको पता है हॉस्पिटल में हम देखे हैं टॉयलेट सीट रेजर को यूज करना है. प्लेस यूज द शॉवर चेयर, बैठ के चेयर लेना है. देन नोटिफाई ऑफ इंक्रीज द पेन, इनको अगर पेन हो रहा है तो उसको नोटिफाई करना है. इन्फॉर्म डेंटिस्ट ऑफ प्रोस्थेटिक डिवाइस, जो भी नॉट ओनली डेंटिस्ट, अगर जो भी दर्द होता है, जो एरिया में ज्यादा पेन होता है, अगर जो भी प्रोस्थेटिक्स हमने यूज कर रहा है, दैट शुड बी इन्फॉर्म टू द डॉक्टर. ठीक. सी पायु, मैंने इससे पहले भी बता चुका हूं, ओपन फ्रैक्चर में एंड क्लोज फ्रैक्चर में वी हैव टू बी फॉलो सम न्यूरल असेसमेंट टू असेसमेंट ऑफ द फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर. सी मे बी द टेस्ट क्वेश्चंस लाइक पेन देखना है, पायु बताया था मैं आपको, पायु मींस पेन, पैरास्थेसिया, पैलर, पल्सिस एंड पैरालिसिस, ये सब देखना है. 5 पी को याद रखना. जो भी एक फ्रैक्चर केस होता है उसमें ये 5 पी वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर इट इज अपर एक्सट्रीमिटीज हो, आइदर इट इज लोअर एक्सट्रीमिटीज हो. ओके, पेन देखना है, पैरास्थेसिया देखना है. पैरास्थेसिया में क्या देखो, जो उंगली में अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है तो उंगली में जैसे टिंगलिंग, ऐसे हल्की सी फीन होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, प्रिकलिंग होता है, नमनेस होता है, हमेशा थोड़ा हमेशा सूखा नहीं रहता, तो गीला टाइप लगता है. ओके, अप द स्किन. देन पैलर, ऑलवेज जैसे कि हमारा हाथ दिखने में कैसा थोड़ा पिंक कलर, रेडिश कलर होता है, बस पैलर कलर में तो कंप्लीटली व्हाइट, क्योंकि द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई दैट शुड बी असेस्ड. पल्सेस देखना है, पेरिफेरल पल्सेस, इधर रेडियल बोन है, जो भी एरिया में जिससे हमारा टिपिकल जो पल्सेस होता है वो शुड बी असेस्ड. देन पैरालिसिस, यानी पैरालिसिस हुआ या नहीं हुआ. देखो हिप फ्रैक्चर किस तरीके से होता है, देखो ये बॉटल ट्रकेंटर जो होता है ना, जो बॉल एंड सॉकेट जिसको हम बोलते हैं, ये जो टूटा हुआ है, सी दिस शुड बी सीन इन द इमेजिनल, रेडियोलॉजिकली हम लोग देखा जाता है, इसको कलर डॉपलर बोलते हैं. इसमें क्लियरली दिख रहे हैं जो बोन फ्रैक्चर हुआ है, ट्रकेंटर जो हेड एंड वॉल सॉकेट जो होता है ना, ये जो सॉकेट ये कंप्लीटली ब्रेक हुआ है. इसके लिए क्या करना है, देखो ये जो पेशेंट का पोजीशन देखो, जो सोया हुआ है, इसमें जो रेड जो शो कर रहा है, देखो जो येलो मार्क जो जिक्र है, पेशेंट इसका पैर सीधा है, इसका जो ये है सीवियर पेन एट द फ्रैक्चर साइट, यहाँ पे तो पेन होगा ही होगा. इनएबिलिटी टू मूव वैलेंट्रल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, पेशेंट को एक्सटर्नल रोटेशन में डाल के रखता है. देन टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना. देयर आर सो मेनी, मैंने बताया था ऑपरेशन करते हैं हिप रिप्लेसमेंट, आइदर इट इज इंट्राकैप्सुलर हो, एक्स्ट्रा कैप्सुलर हो, या इंसर्शन ऑफ पैक्स हो, रॉड हो, स्क्रू हो, प्लेट्स हो. इट विल बी डिपेंड ऑन प्रोस्थेसिस हो. बॉल कंप्लीटली टूट जाता है तो नया वाला बॉल लगा देते हैं, उसको बोलते हैं नया वाला बॉल सॉकेट लगाने में
तो बहुत सारे खर्चा होता है, बट दैट शुड बी bear by the patient attender or patients family members. But that is very important. The prosthesis will be very important during the time of triple hip replacement. Suppose it may occur, it may got very complicated fracture, that time the ball and socket will be artificially fixed, that is prosthesis. Then pre-operative care, consider psychological issues, family support, comfort, safety. ये important है replacement का operation करने से पहले. There should be pre-operative care should be taken by the nurses. Here consider psychological issues, family support, comfort and safety. These are very important for the patient. Then after the surgery is kept in extension and abduction. हाँ, तो मैंने बताया था ना पेशेंट को क्या नहीं करना, do not and do's. ओके, इसमें पेशेंट को हिप को अबडक्शन में रखना है, एक्सटेंशन ही करके रखना है टू प्रिवेंट द डिसलोकेशन ऑफ द हिप, ताकि वो जो प्रेशर अगर क्रॉस में सो गए तो क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने से अगेन इट बिकम डिस्प्लेस्ड. सो इसलिए उसको क्या नहीं करते हैं, हम लोग मना कर देते हैं. ओके, देन दिस इज व्हाट रिलेटेड टू हिप फ्रैक्चर. हमें अभी तो हिप फ्रैक्चर, कॉजेस ऑफ हिप फ्रैक्चर, सिम्टम्स ऑफ हिप फ्रैक्चर एंड सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ द हिप फ्रैक्चर एंड व्हाट एंड ऑल शुड बी असेस्ड after got affected at the hip. See 5 P's याद रखना, either in the जो भी फ्रैक्चर है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो, शॉर्ट बोन फ्रैक्चर हो, और ये लाइक एनी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हो, बट ही शुड बी असेस्ड. ओके, 5 P's याद रखो. उसके बाद प्री ऑपरेटिव केयर है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर मैक्सिमम, एंड सर्जिकल केसेस में ओके सर्जिकल प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, मेडिकल मैन में ज्यादा नहीं होता. इसमें आफ्टर द हिप फ्रैक्चर पेशेंट विल बी sent to the surgery for the replacement of the hip. ठीक है, that is known as hip replacement surgery. ठीक है, then after the hip fracture, then we have the some metabolic disorder of the bone. How the metabolic process, how the bone will be become strong, how the bone will got mineralized, how it will become masked, how the bone will be like a strongest and longest and a cement type जो होता है ना, steel body, would become altered due to the metabolic disorder, that is the metabolic dysfunctions. Okay, the body will not accept, like there is a dietary restriction हो सकता है, old age में especially dietary restriction होने के बाद the unable to digest properly, nutrition नहीं मिल जाता है, the mineralization नहीं होता है. Okay, so many reasons are there that will, especially in the old age case में osteoporosis का ज्यादा risk होता है. osteoporosis, osteomyelitis, rheumatoid arthritis, these are the common bone infections along with the metabolic disorders. Okay, see osteoporosis. Osteoporosis in which the bone mass is lost to the point where the skeletal is no longer able to withstand unexpected or the normal mechanical forces. Most common skeletal disorder, and second only arthritis as cause of the musculoskeletal morbidity in elderly porous. See, मैंने ये बताया था आपको, मास the bone density जो बनता है, so most जो bone mineralized जो होता है ना, जैसे कि composed of various minerals, so then only it become very hard. But in the osteometabolic disorder में the body can't able to withstand the unexpected or normal mechanical forces, like कोई छोड़ दिया, कोई मार दिया, कुछ लग गया तो easily break होता है, easily bend होकर टूट जाता है. ओके, क्योंकि वहां पे स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वहां पे मिनरलाइज्ड है, वहां पे मास नहीं है, और जो होना चाहिए बन में वो नहीं होता. द डेफिशिएंसी ऑफ द ऑल द मिनरल्स. ठीक है, by which the bone being completely built strong. ठीक है, then bone resorption and bone formations. Okay, these are the main another some related to osteoporosis है. There are so many osteoporosis, like देखो osteoporosis कहीं पे भी bone में हो सकता है, not only the skeleton. इसमें दिया गया, इसमें ऐसा नहीं कि इसमें इतना ही नहीं, vertebrae में है तो vertebrae में, इसके अलावा भी है लोअर लेग में भी, अपर लेग में भी, एनीवेयर अब तो जहां भी बोन है वहां पे osteoporosis होता है. बस ये जो दिया है osteoporosis in the vertebrae, like how the normal, how the osteoporous bone. Okay, like bending towards, bending upwards, lateral and right lateral and left lateral. Okay, see risk factors क्या है osteoporosis के लिए. One cause होता है aging, gender cause होता है female में, race, weight, family history, then postmenopausal, then chronic calcium deficiency, then sedentary lifestyle, weight bearing exercise, small frame, low body weight. ठीक है, दिखता है स्मॉल बट लो बॉडी वेट रहता है. इसका मैंने बताया था स्पेशली इन द ओज में, एजिंग में, जेंडर में स्पेशली फीमेल में, क्योंकि पोस्टमेनोपॉज में ज्यादा रिस्क होता है. रेस व्हाइट कलर में होता है, बट रेयर कंडीशन में, बट फैमिली हिस्ट्री इज कॉमन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वेट बेरिंग एक्सरसाइज, एवरीथिंग.
ठीक है. These are another osteoporosis factors. Then chronic smoking, ये another osteoporosis related risk factors है. Chronic smoking, diet in high fat and protein and fat. Phosphorus depletes calcium found in the animal fat and protein. So risk factors बता रहा हूँ मैं. Chronic alcohol use, excessive coffee intake, postmenopausal, estrogen helps the body absorb the calcium. देखो estrogen helps body absorb the calcium. Glucocorticoids involved in the protein and fat metabolism. Aluminium containing antacids reduce the amount of calcium in the body. इसलिए aluminium, जैसे कि हम लोग अल्यूमिनियम जो ज्यादा कंटेन होता है ना एंटासिड, इसलिए इसके लिए क्या करते हैं, रिड्यूस कैल्शियम बॉडी में के अंदर डिप्सिस कर देता है, रीअब्सॉर्ब कर देता है. ओके, ताकि वो कैल्शियम मिलने ही नहीं देता है. तो ऑटोमेटिकली बोन वीकन होगा. मास जो होता है बोन का कंप्लीटली बिकम reduced. Automatically bone is very prone to get a fracture. ठीक है. Hormonal imbalance, not a hormonal imbalance. Estrogen and testosterone are the primary cause of osteoporosis. ठीक है. इसलिए प्रीमेनोपॉज जो post menopausal जो एज होता है ना, especially in the female, is very risk to get the osteoporosis, especially in the women. Okay, in the females. Then secondary risk factors क्या है in the osteoporosis? Like endocrine disorders, hyperthyroidism, then hyperthyroidism, hyperthyroidism. ठीक है. जो GI disorder, mal absorption syndrome, hyperthyroidism, parathyroidism, then COPD, glucocorticoids, drugs like glucocorticoids, heparin, anticonvulsants, loop diabetes, barbiturates. ये जो है ना risk factors, another medical related risk factors है, along with the GI disorders. ठीक है. These are also cause for the GI disorder. इसलिए जो bone mass जब बनता है ना, जैसे कि the composition of the phosphorus, calcium, these minerals जो बना हुआ जो bone होता है ना, it become reduce the capacity to build the mass. Once become mass reduce, automatically the fracture will happen easily. Either थोड़ा भी मार भी देंगे तो हर में टूट जाता है बोन, तो क्विकली टूट जाता है. रेगुलरली जो भी अल्कोहल हो, कैफीन हो, सिगरेट स्मोकर हो, जीआई जिसका भी प्रॉब्लम होता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, पोस्ट मेनोपॉजल है, एजिंग है, वुमेन्स है. ओके, these are the risk factors are to cause the osteoporosis. Then clinical manifestation क्या है? Osteoporosis का क्या symptoms हो सकता है? Okay, back pain, flex of vertebra में, back pain commonly chronic dull ache, sudden onset of acute pain, generally greatly intensified with the coughing, sneezing and movement in the backside में. Then fracture, proximal femur, distal radius, proximal humerus. देखो कौन से एरिया में फ्रैक्चर होने के चांसेस है ऑस्टियोपोरोसिस का? वन, proximal part of the femur, distal radius, proximal humerus, ribs. Fracture due in the osteoporosis. Okay. Then thoracic kyphosis. देखिए मैंने बताया था kyphosis, उसको बोलते हैं डुआगस हम, लॉस ऑफ मोर देन 2 इन स्टैंडिंग हाइट. जैसे कि जो लॉस ऑफ मोर देन 2 इंच स्टैंडिंग हाइट में क्या होता है, थोड़ा लॉस झुक जाता है, जैसे कि ऐसे टूटा होता है. जो नॉर्मल हाइट 5.6 फीट होता है 5.4 इंच. ओके, दिस आर द मेन कॉमन सिम्टम्स ऑफ द osteoporosis. Then what are the management? See, collaborative management by the hospital people. See, there is a lab may not be helpful. ये तो help नहीं करेगा. X-ray तो जरूर करना है. CT हमारा everything. Diagnostic evaluation में bone mineral density measurement is after assessment of these things. Then go for the medical management. क्योंकि जिस तरीके से weaken the deficiency of such type of deficiency of the hormonal like postmenopausal, estrogen, progesterone, calcium, जो कमी के वजह से ये हो रहा है ना, उसको सप्लीमेंट्री ड्रग्स देना. लाइक एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो ना, उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट है, उसको कॉमनली नोन एज हार्मोनल थेरेपी बोलते हैं. स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड के बाद हार्मोनल थेरेपी कराना जरूरी है. ओके, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, कैल्सिटोनिन, नाजल स्प्रे, इरिटेटिंग, पोस्टमैक्स, बोनिवा, then octanol, then before breakfast, without food, then sit upright 30 minutes, full glass of water, milk, then related to calcium rich food, then vertebroplasty and kyphoplasty. These are the application of vertebroplasty. मतलब there is a surgery which will be made by in the vertebra, in the vertebral, जो person जो being forward, then upward, then lateral, जो होता है ना kyphosis, lordosis. Okay, these things will be corrected by the vertebroplasty and kyphoplasty. ठीक है. नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस मैनेजमेंट बाय द नर्सेस. ठीक है. हियर नर्सिंग डायग्नोसिस लाइक पेन रिलेटेड टू
like osteoporosis or any inflammatory process बोल सकते हैं. Impaired physical mobility due to the fracture, or due to the osteoporosis, risk of injuries because low density of the mass of the bones, imbalanced nutrition because due to the aging process, less than the body requirement. Okay, promote the calcium intake, promote करना है. Review diet is included, like क्या क्या डाइट को देखो, डिक्रीज द कॉफिन कंप्लीट करना, अल्कोहल सिगरेट सब कम करना है. एक्सेसिव कैल्शियम लॉस होता है ना, उसलिए उसको सप्लीमेंट्री कैल्शियम देना है. डिक्रीज प्रोटीन एंड फैट, हाई प्रोटीन डाइट कॉज बोन लॉस सेकेंडरी टू कैल्शियम लॉस. ओके, प्रमोट एक्सरसाइजेस, एक्टिव वेट बेरिंग एंड वॉकिंग. दिस शुड बी एडवाइज्ड टू द पेशेंट. ओके, हियर these are all things related to osteoporosis. And osteoporosis, see where osteoporosis, meaning of osteoporosis, risk factors or causes of the osteoporosis, then diagnostic evaluation. After that, we have seen the collaborative management, then osteoporosis nursing. Then another one disease related to the bone, it will be known as that is Piaget disease, especially in the vertebral column. Okay, here the, the PZ disease is very important. Last time this question has come in the board annual exam. Okay, annual exam. Here, PZ disease is excessive bone resorption followed by the done bone formation leading to weakened bone, bone pain, arthritis, deformity leading to pathological fractures and osteogenic sarcoma, like in the cancer. See, here PZ disease, especially in the old age, में ज़्यादा risk है. Excessive bone resorption followed by the bone forming leading to weakened bone. जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग बोन से जो वीकन बोन होता है, लाइक बोन पेन होगा, अर्थराइटिस होगा, इन्फेक्शन ऑफ द बोन, डिफॉर्मिटीज लीडिंग टू पैथोजेनिक फ्रैक्चर एंड ऑस्टियोजेनिक आसन. देन बोन मैरो रिप्लेस्ड बाय द वेस्कुलर फाइब्रोसिस कनेक्टिव टिश्यूज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द लॉन्गर डिसऑर्गेनाइज्ड वीकर बोन. ठीक है, जो हमारा मैं बताया था ना, जैसे कि स्पेशली जो बोन मैरो जो होता है ना, जहाँ पे रिलीज होता है, स्पेशली फ्लैट बोन्स एंड द लॉन्ग बोन्स. ओके, please put audio down. Bone marrow replaced by the vascular fibrous connective tissues leading to formation of the larger and disorganized and weaker bone. Then इसका क्या करना है? एक्सरे करना है, diagnostic evaluation, increase alkaline phosphates to be induced, positive bone scan, जैसे कि हमने color doppler का जो bone scan होता है should be conducted. Then medications like Fosamax, then Actonal, like in the osteoporosis में देते थे, यहाँ पे भी देना है Fosamax and Actonal is the drugs with the slowing of the disease with the early diagnosis. This is the simple image of the PZ disease, because the bone pain, arthritis, the resorption of the bone completely become reduced. Okay, see how it looks, especially actually front side का है, अगर back side देखो ना, completely the narrows, एक squeeze रहता है, ऐसा squeeze, एक सिमट जाता है, उसको बोलते हैं PZ diseases. Okay, these people are risk to get the TB also, उसको बोलते हैं TB of the bone. Okay, then this is what PZ disease. इसमें क्या क्या करना है तो हमने बता दिया. देखो, excessive bone resorption followed by the bone formation. ताकि bone formation होते हैं उसको क्या होता है, leading to weakened bone, धीरे धीरे से सिमट जाता है, resorption होते होते करते. उसके लिए क्या करना है, bone marrow replaced by the vascular fibrous connective tissue leading to formation disorganized then weakened bone. इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक्सरे करना, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इंक्रीज एस्पेक्ट, पॉजिटिव बोन स्कैन कराना. Then medications, Fosamax and Octanol drugs with the slowing of disease with the early diagnosis. Disease को slow करके early diagnosis करने के लिए help करता है. Okay. Then these are the imaginations of the PZ disease. Then osteoarthritis, name only indicating osteoarthritis. Related to osteoporosis हमने देख लिया. The arthritis is related to the infection of the bone. Here it should be known as a degenerative disorder of the joint. Okay, degenerative joint diseases, otherwise known as a degenerative joint diseases. Most common form of arthritis in the elderly, like one cause of disability and innutation of those who are 74 age. जो होते हैं ना, उनके जो का osteoarthritis chances ज़्यादा होता है. Okay, non-inflammatory disease of movable joint, like deteriorations in articular cartilage and formation of the new bone at the joint. See here जो specificationally जो deposition जो होता है, likely cartilage, ये जो होता है ना cartilage, synovial fluid, joint capsule, then synovial membrane, these are the things. While this become inflamed, osteoarthritis become redness, swollen,
then restriction, pain. Okay, the seems to be a very while touching the patient's joint become very hot. Okay, these are the main common symptoms of the osteoarthritis. The another risk factors क्या है? Age है, obesity है, repetitive joints injuries है, genetics है, और भी है. क्या है? नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी बहुत ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज करता है. ओके, ये स्पेशली ओल्ड एज, जितना मोटापा होता है उतना रिस्क रहेगा. रिपीटेटिव जॉइंट इंजुरीज, बार बार एक्सीडेंट होना, बार बार उसका ऑपरेशन करना. ओके, जेनेटिक्स. देन ऑस्टियोआर्थराइटिस कार्डिनल सिम्टम्स क्या है? मैंने ये तो बता दिया, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, हॉट टू टच एंड tingling. Some patients feel restricted movement. Okay, after the movement relieved by the rest, character by the aching, poorly localized on motion with the weight pain. देखो पेन कब कब होगा? आफ्टर मूवमेंट रिलीव्ड बाय द रेस्ट. मूवमेंट होने में पेन होगा, जो बोलते हैं ना, मैं थोड़ा चलने लगी तो पेन होने लगता है. दैट इज द सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. ओके, अगर रेस्ट कर दिया तो पेन ऑटोमेटिक कम होगा. आफ्टर द एक्टिविटी सॉरी कैरेक्टराइज्ड बाय एचिंग, पेन poorly localized, वो एरिया में लोकल पेन होता है. ऑन मोशन विथ weight bearing. Here stiffness, the joint become very stiff, like very, while touching the become very tight and hot on awakening in the after month, then after activity of relatively short duration. Then other symptoms like crepitious, limitation of motion, then weight bearing joint weaken, Haberden nose like lateral enlargement of the distal phalangeal joint, then Boucher's nodes like found at the proximal intraphalangeal joint में Boucher nodes के ना joint node type का formation को तो Boucher's node बोलते हैं. ठीक, ये जो दिख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं Boucher node. मतलब ये जो node type का जो उड़ता है ना ये joint में, ये है Boucher nodes. Okay, see Haberden nodes seems to be in the joint metacarpal carpal bone. देखो जैसे कि जो था मोटा मोटा लगता दिखता है. then इसके लिए डायग्नोस्टिक, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक्सरे करना है, डिक्रीज जॉइंट रिफ्लेक्स, बोनी स्क्लेरोसिस, स्पर फॉर्मेशन एंड फ्लूइड एनालिसिस का. इसलिए बोलो फ्लूइड एनालिसिस कब करोगे? उसका जो मैनेजमेंट का एक तरीका होता है डायग्नोसिस, उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस. जब हम लोग फ्लूइड एनालिसिस कब करते हैं? तो बोन का जो सिनोवियल जॉइंट के अंदर फ्लूइड को एस्पिरेट करना है. ओके, उसको ऑस्टियोसेंटोसिस बोलते हैं. ओके, वो फ्लूइड एनालाइसिस करने के लिए फ्लूइड लेना जरूरी है. ओके, लास्टली सिंपैथेटिक रिलीफ एंड लाइक ट्रीटमेंट में क्या करना है? सिंपैथेटिक मिनिमाइजेशन फर्दर जॉइंट डिस्ट्रक्शन. लाइक देखो क्या क्या करना है. सिंपैथेटिक मैनेजमेंट कॉमनली मैंने बताया था, जितने भी फोन डिसऑर्डर है, वो जितने भी जॉइंट पेन रिलेटेड पेन है, बट द ड्रग इज ओनली वन ड्रग इज दैट इज NSAID, कॉमन ड्रग. एंड एक्सरसाइज, रेस्ट, वेट लॉस. NSAID ड्रग्स लाइक जो भी है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, गैस्ट्रिक इरिटेशन, ब्लीडिंग, then disturbance in the platelet formations, ये related cause करता है. Okay, rheumatoid arthritis. So the last part of this musculoskeletal system, that is rheumatoid arthritis. अभी तक हमने देखा है osteoporosis and osteoarthritis देख लिया अभी. Okay, then rheumatoid arthritis, here the rheumatoid arthritis like the chronic systematic inflammatory disease of the movable joints. This is known as the rheumatoid arthritis. 6 million Americans, prevalence of increases with the age for the both the men and women common है. ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोसिस किस तरीके से करना है? जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस करते हैं वैसे ही करना है रोमेटॉइड आर्थराइटिस. देन कार्डिनल सिम्टम्स क्या है? अनएक्सप्लेन्ड पीरियड्स ऑफ द एक्सर्बेशन एंड रिमिशन, like in the women's painful and swollen joints, bilateral and symmetrical. Bilateral और symmetrical क्या होता है? painful swollen joints, morning stiffness lasting longer than 1 hour in morning and after activity. देखो जैसे कि rheumatoid arthritis का मेन सिम्टम्स क्या है? जो बैठने के बाद बहुत टाइट हो जाता है जॉइंट्स, थोड़ा उठ के चलते चलते क्या होता है? रिलैक्स मिल जाता है. ओके, कार्डिनल सिम्टम्स है उसका, किसका? rheumatoid arthritis का. और उसके the cluster to 4 to 6 process करने के बाद morning stiffness, arthritis in the 3 or more joints, arthritis of the hand and joints, symmetrical, rheumatoid nodules, serum rheumatoid factor and radiographic changes. देख rheumatic arthritis का another important symptoms क्या है? abnormal labs like elevated ESR बढ़ जाएगा, rheumatoid factor, anemic होगा, WC in the synovial fluid and X-ray में bone degeneration दिख जाएगा. Okay, rheumatoid arthritis treatment क्या है? Like
You have to be reduced, try to reduce the inflation, alleviate the pain, preserve the function, prevent the deformity. Treatment is the same as osteoarthritis, are pretty much both, right? RA and OA cause severe loss of the quality of the life. Okay, the restriction जो movement होता है, like should be range of motion should be properly activated and prevent the deformities. ठीक है. Rheumatoid arthritis का another management क्या है? Rest करना है, PT, aspirin, corticosteroid, then prothrombin, then gold salts. This is modified anti-rheumatic drugs like plequenil, azulfadine, then methotrexate. So disease modifying anti-rheumatic drugs. Rheumatic drugs like plequenil देना है, azulfadine, then methotrexate, then gold salts, the salts, then corticosteroids for compulsory rest and treatment. Then rheumatoid arthritis looks like the image से देख लो, इसका patient का not only the upper extremities palm, इसका same in the lower extremities also. ठीक है. These are related to rheumatoid arthritis. Tomorrow I will start with the amputation and prosthesis. Tomorrow I will continue with the prosthesis and amputation and traction. We'll complete the musculoskeletal system. You should be